Hello and welcome to viewers of Shriman Narayan Physics. Dear students, today's the video program it is comprised of a set of multiple choice question. So you can observe we have supplied today in this video program a set of 8 multiple choice questions. I mean to say that the total number of MCQ, that is multiple choice questions, is 8. One by one I am going to discuss to you people, and these questions are related to electric potential, electric dipole, capacity, capacitance of parallel plate capacitor, etc. So let us start one by one. The first question, it is telling that the electric potential due to an electric dipole at a point of distance r from its center and on the axial line vary as, the first option is r, second option r to the power minus 1, third one is r square, and the fourth option is r to the power minus 2. You know very well, if the observatory point lies on the axial line, then in that very situation the value of electric potential due to an electric dipole, it is given as V equals to P by 4 pi epsilon naught into R square, where the symbols have got their usual meanings. I mean to say the distance is R square, numerator is R square, that is it is inversely proportional to the square of the distance. So correct option is this 4. Now second question. Work done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point on the surface of a conductor is, the first option 1 volt, second option 2 volt, third one is 3 volt, and fourth one is 0. My dear student, in this question it is telling that there is a conductor, and on the surface of the conductor there are 2 points, and a charge of 1 coulomb is allowed to move from one point to other point. In that very situation, what will be the work done? So if you will minutely observe the option, you can see here the work done has been expressed in terms of volt. But it is clear because the charge is 1 coulomb. You know very well, the potential difference between 2 points is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to other point. That's why in that sense here the option has been given in terms of volt. But remember here the correct option of this question is fourth, that is the work done will be equal to 0. Why it will be 0? Because the conductor is the surface of a conductor, it is of equipotential. I mean to say that the points, the 2 points which you will select on the surface of the conductor will have got same value of potential difference, so same value of electric potentials. So potential difference will be 0, and in that very situation work done is equal to potential difference multiplied by charge, and potential difference is 0, so 0 multiplied by 1, it will come equal to 0. Third question, work done in moving a positive charge on an equipotential surface is negative, positive, 0, infinite. It is very clear since the surface is equipotential. So if it is equipotential surface, then you know very well, if a charged body is allowed to move on an equipotential surface, always remember this fact that work done will be 0 because the potential difference will be 0. Fourth option, relation between dielectric constant K and electric susceptibility is, the first option is chi E is equal to 1 plus K, second option K is equal to 1 plus chi E, third one is chi E equals to 1 by 1 plus K, fourth option K is equal to 1 by 1 plus chi E.
So correct option is the second, that is K is equal to 1 plus chi E. Now question number 5. Come to this question number 5. Capacitance of a parallel plate capacitor with air between the plates of the capacitor is C. I mean to say that there is a parallel plate capacitor and in between the two plates of the capacitor air is filled. In that very situation, the capacity of that capacitor is C. Now the question is telling the capacitance of this capacitor when dielectric of dielectric constant K is introduced between the plates is. First option K times C, second option C by K, third C, फोर्थ C by K स्क्वायर. जैसा कि तुम जानते हो, अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो और उनके दोनों प्लेट्स के बीच में यदि हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस करते हैं तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है उतना टाइम्स कैपेसिटेंस जो होता है इंक्रीज कर जाता है. क्योंकि यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम रखते हैं उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K है. इस तरह से उसकी जो नई कैपेसिटी होगी वह K टाइम्स द प्रीवियस कैपेसिटी. क्योंकि प्रीवियस कैपेसिटी C है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K है. So the new capacity will be K times C. So this first option is correct. Now let us discuss the question number 6. It is telling each plate of a parallel plate capacitor has charge Q0. यानी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके दोनों प्लेट पर जो चार्ज है वह Q0 है. दोनों प्लेट का यहाँ सेंस है कि एक पर प्लस Q0 होगा, दूसरे पर माइनस Q0 होगा. When connected to a battery, अर्थात ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है. What will be the magnitude of the charge on each capacitor if dielectric of dielectric constant 6 is introduced between the plates of the capacitor? कहता है कि वह जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है उन दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दिया गया है जिसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 6 है. उस स्थिति में जो चार्ज होगा कैपेसिटर पर वह कितना होगा. सवाल सी बात है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 6 है उसमें अगर इंट्रोड्यूस करते हो दोनों प्लेट्स के बीच में तो ऐसी स्थिति में उसकी कैपेसिटी 6 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी. 6 टाइम कैपेसिटी इंक्रीज करने का मतलब कि पहले यदि चार्ज Q0 हो तो अब जो चार्ज होगा वह कितना होगा 6 टाइम्स Q0. So correct option is second. Now come to discuss question number 7. Question number 7, it is telling 64 identical drops each of capacity 5 microfarad combine to form a big drop. अर्थात 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं और ये जो ड्रॉप्स हैं स्फेरिकल शेप में हैं और ये जो स्फेरिकल शेप है इनकी टोटल ये जो ड्रॉप्स हैं उनकी संख्या 64 है और हर की रेडियस बराबर है. सब आइडेंटिकल है अर्थात सब की रेडियस बराबर है और प्रत्येक की कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड ये दिया हुआ है. अब कहता है ये 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स आपस में कोलैप्स करते हैं और इस तरह से कोलैप्स करते हैं और इस तरह से और एक बहुत बड़े ड्रॉप का निर्माण करते हैं. जब वो बड़े ड्रॉप का निर्माण करेंगे तो उस बड़े ड्रॉप की कैपेसिटी क्या होगी, यही क्वेश्चन है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन यू फेस सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देन यू अप्लाई द फार्मूला C डैश इज इक्वल टू n टू द पावर 1/3 इंटू C. यानी ऐसी स्थिति हो तो यहाँ पर हम तुम लोगों को बता देते हैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक. C डैश इज इक्वल टू n टू द पावर 1/3 इंटू C. जहाँ n क्या है वह नंबर है कितने आइडेंटिकल ड्रॉप्स एक दूसरे से कोलैप्स कर रहे हैं. क्योंकि n का मान 64 है और 64 को तुम 4 टू द पावर क्यूब लिख सकते हो तो 4 टू द पावर क्यूब और उसका पूरा का पावर 1/3
और पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स दी सी, तो 4 और प्रत्येक की है 5, तो हम 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, दैट वी विल गेट 4 into 5, that is 20 microfarad. So the correct option is third, that is the answer of bigger drop, the capacity of bigger drop, it will be equal to 20 microfarad. Now the last question, it is telling that the electric field intensity 0 between the two plates of a parallel plate capacitor is constant when there is air between the two plates. और ये बात क्लियर है, तुम जैसा कि जानते हो किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच एयर जैसी माध्यम है, तो दोनों प्लेट के बीच का जो रीजन होता है वह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अर्थात अगर उसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एक आइडियल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान लें जिसमें कोई भी फ्रिंज फील्ड एंड पॉइंट्स पर डेवलप न हो, तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही माना जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, नाउ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन देम बाय रिप्लेसिंग एयर। कहता है दोनों प्लेट्स के बीच में एयर को रिप्लेस करके और एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी हो सकता है उसको रख दिया जाए, और यदि उसको हम रख देते हैं तो ऐसी स्थिति में जो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा वह क्या होगा, घटेगा, सेम रहेगा, या बिकम्स 0 हो जाएगा, या फिर इंक्रीज करेगा। तो इसके लिए पढ़े हो फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दैट वेरी सिचुएशन इज गिवन एज E is equal to E0 डिवाइडेड बाई K, जहां K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यानी पहले फील्ड अगर E0 है और जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किए जिसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K है, तो फील्ड यहाँ चूंकि K डिनोमिनेटर में है अर्थात फील्ड रिड्यूस कर रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल डिक्रीज। नाउ I am going to finish this video program. At the end of this video program, I am telling to you people that you must share this video among your friends, among your colleagues, and you must not try to forget to subscribe this video channel. Okay, thanks.